हमारे साथ हैं वाशिंगटन के तहकीकी इदारे स्टिम्सन सेंटर से मुंसलिक तज्जियाकार समीर लालवानी. समीर, वेलकम टू व्यू 360. Thank you. So I want to start with this possibility of cutting aid for Pakistan. Is this a sign of frustration with Pakistan, or is this a way to gather funds for US infrastructure projects? It is probably a little bit of both. I think there's a lot of frustration with Pakistan. The US has a policy in Afghanistan that doesn't seem to be making a tremendous amount of progress, and there's a lot of blame being heaped on Pakistan excuse me, for sanctuaries, for insufficient cooperation to pressure the Taliban to the table. So there's frustration on one side. There are US lives being lost in Afghanistan on attacks from most recently Intercontinental Hotel, where I knew somebody who was actually killed recently there. And so I think there is frustration. There's also an infrastructure deficit in the United States that's been there for a long time. But linking the two is rather strange. There's no reason to think that the aid that you'd be able to cut from Pakistan would somehow offset the infrastructure deficit in the United States. So समीर कहते हैं कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या पाकिस्तान के लिए फ़ंड्स की फ़राहमी, नॉन मिलिट्री एड की फ़राहमी को रोकना पाकिस्तान के साथ नाराज़गी का इजहार है, या फिर अमेरिका में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो रकम दरकार है उसको हासिल करने का तरीका है. तो वो कहते हैं कि दोनों ही गोल्स अचीव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बात यह है कि ये इन दोनों को आपस में टाई कर देना कुछ अजीब है. Why is it strange? The shortfall in resources. So there's the U.S. infrastructure deficit is roughly, I think they mentioned about hundreds of billions. Right. I've seen estimates about up to $111 billion. Yeah, I've short. seen estimates from U.S. engineers that say about $1 trillion deficit in sort of long-term infrastructure investments. The amount of money that we're talking about going to Pakistan in terms of aid is in the millions of dollars, and a lot of it is doing a lot of good, particularly economic aid going towards civilian purposes, and frankly, even some of the cooperation that we get with the military in Pakistan is important and useful for U.S. interests in the region. We still have large interests in the region. So the idea that somehow this would solve our deficit problem, our infrastructure deficit problems, seems to be a bit of a red herring. There are other reasons to go after sort of aid in Pakistan, but this doesn't seem to be the right one. So समीर कहते हैं कि ये तरीका निकालना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो फ़ंड्स ज़रूरी हैं उनकी कमी के लिए ये तरीका निकालना कि पाकिस्तान को फ़ंड्स की फराहमी मुअत्तल की जाए, ये थोड़ी अजीब बात इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर्स दिए जाते हैं, जबकि जो डेफिसिट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए इस वक्त अमेरिका में है वो अरबों डॉलर्स में है. तो एक तो ये पैसा ऑफसेट नहीं कर सकेगा, और दूसरा ये कि पाकिस्तान को जो इमदाद दी जा रही है उसके भी फ़वाइद हासिल हो रहे हैं और उसकी भी ज़रूरत है. What are the chances that something like this could actually happen? I don't think that for the purposes of infrastructure aid that Pakistan's aid will be cut. I think, though, there are other pressures driving down US aid. What are the chances of maybe cutting non-military aid for Pakistan? I think they're fairly low right now. I think the U.S. government is committed to a strategy in the region. That strategy depends on, at minimum, sort of goodwill from some of the constituency in Pakistan, and potentially even higher levels of cooperation. And to cut all aid would essentially squander any opportunity for Pakistan to cooperate with the United States on its objectives in Afghanistan. So fairly low. So इस बात का इम्कान कि पाकिस्तान के लिए नॉन मिलिट्री एड यानी जो माशी और दीगर प्रोग्राम्स के लिए जो इमदाद दी जाती है वो ख़त्म हो जाएगी. समीर लालवानी की नज़र में फ़िलहाल उसका इम्कान काफ़ी कम है. So the two hearings that happened on the Hill yesterday, there was frustration that was expressed. What is the takeaway for both the Trump administration and also for Pakistan? So I think there's three things that are driving the types of hearings that you're seeing on the Hill. There's a lot of frustration, again, as I mentioned, because of setbacks in U.S. strategy, but also the loss of lives, both U.S. troops, but also U.S. civilians who are there for missions about sort of building stability in Afghanistan. There's an effort at coercing Pakistan as well. We're trying to sort of change Pakistan's behavior when it comes to dealings with the Taliban and sort of inducing a reconciliation process. And I think the third reason is that there's probably an actual need for rebalancing of the U.S.-Pakistan relationship. Right now, it's structured in the form of an alliance, and that leads to outsized expectations on both sides, and that may not be appropriate. We actually might be able to do more together if we adjusted down our relationship to ones where it's maybe a little more honest about sort of piecemeal cooperation rather than wholesale cooperation. All right. So समीर कहते हैं कि तीन जो हैं टेक अवेज़ हैं जो कल दो बड़ी बड़ी हीयरिंग्स हुई जिनके बारे में हमने आपको बताया. एक तो ये कि अमेरिका जानों के ज़िया से परेशान है, न सिर्फ फ़ौजी बल्कि आम शहरियों की भी जो जानें ज़ाया हो रही हैं अफ़गानिस्तान में, और जो अफ़गानिस्तान में सब फ्रस्ट्रेशन है ये उसका एक तो साइन था और उस वजह से अमेरिका परेशान है. तो एक ये बड़ा टेक अवे है इन हीयरिंग से. दूसरा ये कि पाकिस्तान को यह आमादा करना कि वो तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कुछ ना कुछ करे. और तीसरा ये भी कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक तवाज़ुन नए तरीके से देखा जाए, इस रिलेशनशिप को एक नए
नए लेंस से देखा जाए और एक्सपेक्टेशंस को, जो तवक्कुआत दोनों जानिब की एक दूसरे के साथ हैं, उनको एक हकीकी अंदाज से देखा जाए और उनको थोड़ा टेम्पर डाउन किया जाए, थोड़ा उनको उनमें कुछ कमी लाई जाए, ताकि दोनों साइड्स जो गोल्स मिलकर अचीव करना चाहती हैं वो मिलकर अचीव करें। क्योंकि होल सेल कोऑपरेशन जो है, हर लिहाज से कोऑपरेशन शायद मुमकिन ना हो, लेकिन कुछ अहम मौज़ूआत पे कोऑपरेशन ज़रूरी भी है। समीर लालवानी, एज ऑलवेज वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इनसाइट। Happy to be here.